Hey guys, welcome back to another chapter of Know Your State Odisha book. This is the chapter number 9. तो आज आम चैप्टर नंबर 9 देखा जोटा कि रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ओडिशा। फास्ट आम देखा जे एनुअल रेनफॉल केते रोचे ओडिशार टोटाल रोचे 230.76 BCM इन ए नॉर्मल ईयर। सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी रोचे 95.54 এবং ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିପ୍ଲେନିସମେଣ୍ଟ ରହୁଛି 21 BCM ଆନୁଆଲି। 12ଟା ମେଜର ରିଭର୍ସ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ତାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରିଜ୍। ତ ରିଭର୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରିଭର ଗୁଡ଼ା ମେନଲି ପେନିସୁଲାର ରିଭର୍ସ। ଦେ ଆର୍ ନନ୍ ପେରେନିଆଲ ଆଜ୍ ଦେ ଆର୍ ରେନଫେଡ୍। ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ବର୍ଷା मनसून पाइले वर्षा जल जो ही एगुड़ा प्रभावित होता है। जोड़ा आम देखुचे गंगा जमुना जोड़ा मोर हिमालय बाहरी आसने पेरेनियल, बट एमाने रेनफेड नॉट पेरेनियल। इन अपर रिचेस ऑफ ओडिशा स्लोप इज स्टीप, स्लोपटा स्टीप रोचे और नो ड्रेनेज प्रॉब्लम। हाउएवर as the river flows into coastal plain, the slope flattens and velocity reduce। कहीं पहाड़िया अंचल जो नदीटा बही आसो स्लोप स्टीप थाए, स्पीड वेलोसिटी किसी प्रोब्लेम हुए नहीं, ड्रेनेज प्रॉब्लम रुए नहीं। बट कोस्टल प्लेन्स रे ड्रेनेज प्रॉब्लम रुए, कंजेशन हो जाए। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर्स इन डिस्ट्रिक्ट्स, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मयूरभंज दैट इज सुवर्णरेखा रिवर, साउदर्न पार्ट of मयूरभंज एंड पार्ट्स ऑफ बालेश्वर रे बुढ़ा बड़ंग बी फॉर बी मन रखिपर। सुवर्णरेखाटा नॉर्थ रे रोची तो मयूरभंज, देन केउझर और भद्रक रे बैतरणी, देन ब्राह्मणी नदी रोची बाकी सुंदरगढ़ ढेंकानाल सब जगह। महानदी मैक्सिमम जगह रोची तो सेटा देखा दरकार नहीं। इंद्रावती और कोलाब रोची मालकानगिरी, नवरंगपुर और कोरापुट साउथ पार्ट रे साउथ वेस्ट, एंड देन गंजाम रे रोची मेनली ऋषिकुल्या नदी। वंशधर नागावली रिवर रोची गजपति और रायगढ़ रे देखिपारे। ओडिशा हैज सेवरल मेजर रिवर बेसिन्स कवरिंग 1,51,976 स्क्वायर किलोमीटर। एटा होची रिवर बेसिन्स 1,51,976 स्क्वायर किलोमीटर, एंड माइनर रिवर बेसिन्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, मेजर माइनर मिसिक। सोर्स ऑफ द रिवर्स ऑफ ओडिशा 6टा ग्रुप रे डिवाइड कर दिया जायछि, जो ओरिजिन है ओडिशा रे जो रिवर्स माने अछंदी। फर्स्ट होची छोटनागपुर प्लाट्यू, देन अमरकंटक मालभूमि, महानदी डेल्टा, केउझर प्लेट्यू, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट एंड अदर रिवर्स फ्रॉम ईस्टर्न घाट। छोटनागपुर प्लेट्यू सुवर्णरेखा एंड ब्राह्मणी दुटा नदी, अमरकंटक मालभूमि महानदी, महानदी डेल्टा बहुत सारा सेमती नदी बाहरी। देन बैतरणी नदी बाहरी केउझर, ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट रो बुढ़ा बड़ंग, ऋषिकुल्या, सालंदी, देन अदर रिवर्स फ्रॉम ईस्टर्न घाट नागावली, वंशधरा एंड द गोदावरी सिस्टम। फास्ट आम देखा रिवर्स ऑफ छोटनागपुर प्लाट्यू किए थे ना सुवर्णरेखा और ब्राह्मणी। फास्ट नदी होची सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा छोटनागपुर प्लाट्यू नागरी विलेज रांची झारखंड रो ओरिजिन है। खरकाई हूँ यार लंगेस्ट ट्रिब्यूटरी, लंगेस्ट ट्रिब्यूटरी हूँ खरकाई। देन कम्स तो एटा मेनली फ्लो करुची मयूरभंज और बालेश्वर, मेनली फ्लोज थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मयूरभंज एंड बालेश्वर देखी पूर्व
सुवर्णरेखा मेनली मयूरभंज बालेश्वर। ब्राह्मणी नदी वेदव्यास राउरकेला से छोटनागपुर प्लेट्यू इन वेदव्यास राउरकेला। टोटाल लेंथ इन ओडिशा होची 541 किलोमीटर। कैचमेंट बेसिन भी 39,000 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा आफ्टर महानदी रिवर। तो लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा होची हमर महानदी। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर जोटा कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में पड़े ब्राह्मणी नदी। Two smaller rivers sunk, that is right bank, and the Koel, that is left bank. लेफ्ट बैंक पे मन रखिपर KL राहुल आम ना जानते तो से मन रखिपर कोएल फॉर लेफ्ट एंड संक राइट। जॉइन एट वेदव्यास नियर राउरकेला इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट टू फॉर्म द ब्राह्मणी रिवर। ब्राह्मणी रिवर सेमती फॉर्म होइछि। माइनर जॉर्ज गोट रोची एट रेंगाली। ब्राह्मणी रो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रोची संक जोटा कि मीट करुचे महानदी रो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी विरूपा। महानदी रो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रोची विरूपा एंड ब्राह्मणी रो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होची संक। Brahmani and Mahanadi have common outlet for their flood water through Moipura. They have formed the Wheeler Island. तो Wheeler Island ब्राह्मणी और महानदी मिसिकिरी तैयारी करछन्ती। Rivers from अमरकंटक प्लेट्यू that is महानदी। ओरिजिन कोट होची छत्तीसगढ़ रो। तो आमे देखिले सुवर्णरेखा रिवर ओरिजिन होची रांची झारखंड रो। ब्राह्मणी होची वेदव्यास राउरकेला रो। देन अमरकंटक प्लेट्यू महानदी इन बस्तर प्लेट्यू ऑफ छत्तीसगढ़। टोटल लेंथ इन ओडिशा होची 494 किलोमीटर। बट लेंथ ऑफ ब्राह्मणी रिवर इन ओडिशा इज 541। लॉन्गेस्ट तो ब्राह्मणी आछियो लार्जेस्ट महानदी। टोटल लेंथ इन ओडिशा इज 494 किलोमीटर। कैचमेंट बेसिन बहुत ही अधिक 65,000 स्क्वायर किलोमीटर इन ओडिशा। दैट्स व्हाई इट इज द लार्जेस्ट रिवर नॉट बाय लेंथ बट बाय द एरिया। द रिवर इज ऑल्सो नोन एज सर ऑफ ओडिशा। ओडिशार दुख नामित लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा एंड द 6th लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया 6 नंबर रैंक ओडिशा नंबर 1। इट फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड एंटर्स इनटू ओडिशा नियर पाड़ीगाँ। पाड़ीगाँ देकी एटा ओडिशा को एंटर कर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हीराकुद डैम इज द लॉन्गेस्ट आर्देन डैम इन इंडिया which is built in Mahanadi 1957. Then हमें देखिए तेल रिवर meets Mahanadi on its right bank which is the largest tributary of this river. तो largest tributary हमें देखते ले सुवर्णरेखा खरकाई सेमती आर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रोचे तेल रिवर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। जॉर्ज गोटे बनाऊँ सातकोशिया रे जॉर्ज एट सातकोशिया। ब्राह्मणी जॉर्ज गोटे बनई कौटी जॉर्ज एट रेंगाली। ये जॉर्ज बनाऊँ सातकोशिया रे। बिफोर एंटरिंग कटक इट फॉर्म्स ए डिस्ट्रीब्यूटरी कॉल्ड काठजोड़ी। कटक एंटर करिया पूर्व डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म करछि काठजोड़ी। ट्रिब्यूटरी मीन्स जोटा नदी आसी मिसी थाए। डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स जोटा नदी बाहरी जाए मीन्स डिस्ट्रीब्यूट माने आम कौन डिस्ट्रीब्यूट दे दौचे। तो गोटे नदी यदि आ गोटे नदी मिसला देन इट्स कॉल्ड ए ट्रिब्यूटरी। यदि ए अलग है कि आ गोटे नुआ फॉर्म कला देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटरी।
All these rivers including Mahanadi fall into Bay of Bengal except Daya and Bhargavi rivers, which fall into Chilika Lake. Question ଆସିପାରେ ଦୟା and ଭାର୍ଗବୀ କେଉଁଠି ଫଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଚିଲିକା ଲେକ୍ରେ। Rivers of Mahanadi Delta. Rivers of Mahanadi Delta जोड़ा रही distributary of Mahanadi. बहुत सारा अच्छी गोबरी, स्वामली, प्राची, कादुआ, नूना, धानुआ, रत्नचिरा एक्सेट्रा. देन महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट. तो वाटर डिस्प्यूट क्या सहित हम जेहतु छत्तीसगढ़ बाहरी तो आम छत्तीसगढ़ सहित ही यार वाटर डिस्प्यूट रहा. तो महानदी रिवर डिस्प्यूट रोचे issue between Odisha and Chhattisgarh. To settle this dispute, the Inner State River Water Dispute Act of 1956 allow creation of special tribunal. 1956. Then comes the rivers from Keonjhar Plateau. Keonjhar Plateau, Baitarani River, Kodwachina, Gonasika Hills, or it is also known as Gupta Ganga Hills in Keonjhar district. Total length are rochi 365 km. 365 km. It is eastward flowing river of peninsular India. Act as a boundary between Odisha and Jharkhand. It is an important question. जे क्यों river टी Odisha और झारखंड भितर boundary हिसाब रे काम करे. এটা হচ্ছে বৈতরণী রিভর. কেউঝর ডিস্ট্রিক্টর গোনাসিকা আর গুপ্তগঙ্গা হিলসରୁ ବାହାରିଛି. Baitarani river flows in northerly direction. It changes its path suddenly by 90 degree and flows eastward. तो बाउंड्री क्रिएट करी फ्लो करिछि झारखंड और ओडिशा. It enters into Bay of Bengal after joining Brahmani at Dhamra near Chandwali at Bhadra district. Then Budhavalanga river. Budhavalanga river originates from Similpal hill, that is Moyurbhanj district. ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ରିଭର ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ରିଭର୍ସ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସ୍ଲୋପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ, ମାନେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟର ଇଷ୍ଟ ସ୍ଲୋପ୍ରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି. ତ ବୁଢ଼ାବାଳଙ୍କ ରିଭର ଫାଷ୍ଟ ରିଭର ସିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ରୁ ଏଇଟା ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ. There are Paleolithic and Neolithic sites situated in the valley of Budhabalanga river. एटा भी गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. Paleolithic और Neolithic sites हमें कोड देखिए पाओ, that is valley of Budhabalanga river. Rushikulia river, Rushyamala mountain of eastern Ghat, Kandhamar district. तो easy to remember, that is Rushyamala पर्वतରୁ origin ହେଇଛି. It is eastern Ghat. Eastern part of eastern Ghat, Kandhamar district, Daringvadi hills. Important question. Daringvadi hills रो को नदीर उत्पन्न होइछि, that is Rushikulia. Rushikulia is also known as lifeline of Ganjam district. It has no delta. कौन सी डेल्टा एत बड़ नदी डेल्टा ना. ये गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. This river basin is almost pure shaped and well developed dendritic tributary system. Dendritic means शाखा प्रशाखित है. देखिए जो गचर शाखा जमी व्यापी जाए सेमती तार रिवर बेसिनटा हूँ पियर शेप्ड विथ डेंड्राइटिक ब्रांच्ड ट्रिब्यूटरी सिस्टम. Then another important river is Salandi river. Salandi river origin is Meghasini mountain, Keonjhar district. Flows through
mainly Bhadrad district. It is a tributary of Baitarani river. Thus, it doesn't directly fall into Bay of Bengal. चांदीवाल निकट में बैतरणी रिवर सहित मिसी जाए तापर बे ऑफ बेंगल डिस्चार्ज हुए. सालंती डैम इरिगेशन पर्पज लगे यहाँ पर तैयारी कराई. मेघासिनी माउंटेन बाहर भद्रक डिस्ट्रिक्ट फ्लो करे. मेघासिनी माउंटेन आम जानते कौटी प्रेजेंट अच्छी दैट इज इन केउझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. देन अदर रिवर्स ऑफ ईस्टर्न घाट रे किसी इंपोर्टेंट रिवर देखा. गोटे बाहुड़ा रिवर जोटा कि फ्लोज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अप टू 55 किलोमीटर. देन साउथ ईस्ट डायरेक्शन 17 किलोमीटर इन ओडिशा. देन इन आंध्र प्रदेश फ्लो 80 किलोमीटर. नागावली रिवर आ गोटे ना हूँ इम्पोर्टेंट एटा लांगुल्य रिवर. इट इज ऑल्सो नोन एज लांगुल्य रिवर. बंशधरा रिवर गोटे वाटर डिस्प्यूट रोची जोटा कि वाटर डिस्प्यूट विथ आंध्र प्रदेश. गोटे इंट्रोडक्शन देखते छत्तीसगढ़ सहित महानदी. देन वाटर डिस्प्यूट विथ आंध्र प्रदेश ओवर बंशधरा रिवर. देन देखिए गोदावरी रिवर सिस्टम. गोदावरी रिवर सिस्टम रे रोचंती इंद्रावती, कोल्लाब, माचकुंड एंड सिलेरू रिवर. इंद्रावती रिवर इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पारिबो जे इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन ओडिशा. इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन ओडिशा एंड एंटर्स बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ और ओडिशा भितर बाउंड्री किए बनाए दैट इज इंद्रावती रिवर. कोल्लाब रिवर उपर आम जानी अपर कोल्लाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक दैट इज इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट. देन माचकुंड और सिलेरू रिवर hydroelectric dams on the Machkund river at Jalaput reservoir. Jalaput reservoir रोजी कोटी the Machkund और Siler river रे. The Balimela reservoir has been created to generate hydel power over Sileru river. Okay, Balimela reservoir मध्य सेठी तैयारी होइछि. Mahanadi is tidal from about 35 kilometers. Tidal river में देखिबा जे the tidal rivers are found in lower reaches of the coastal plain of Odisha. Mahanadi is tidal from about 35 kilometers, whereas the tributary of Mahanadi Devi is tidal for 45 kilometers. Devi Nadi ta 45 kilometer tidal and Mahanadi is tidal from about 35 kilometer. Then we will talk about the lakes of Odisha. Odisha has both natural and artificial lakes. Ansupa lake. Ansupa lake होची गोटे फ्रेश वाटर नेचुरल लेक. बांकी रो कटक ठारे सिचुएटेड. केमिति फॉर्म होइतला ना मिनेंडर शिफ्टिंग ऑफ महानदी. शेप होची हॉर्स. गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे हॉर्स शेप लेक कोटा अंशुपा लेक. द लेक इज 5 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1.6 किलोमीटर वाइड. द लेक इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द महानदी रिवर बाय ए चैनल नोन एज काबुला नाला. काबुला नाला देखी एटा कनेक्टेड है महानदी रिवर सहित जोटा कि अंशुपा लेक. हॉर्स शू शेप अश्वक्षुराकृति हृद जोटा कहते. देन कम्स द चिलिका लेक. चिलिका लेक इज ए brackish water lagoon. It is the largest brackish water lagoon in Asia. It is the largest brackish water lagoon in Asia near the village Motto, a 32 kilometer long narrow outer channel Mugermukh
connects this lagoon with Bay of Bengal. तो Bay of Bengal सहित चिलिका लेक केमिति कनेक्ट होइछि ना मुगरमुख चैनल द्वारा. In 1981 the first Indian wetland international importance द्वारा रामसर साइट कन्वेंशन कराइथिला. Chilika has been declared as a bird sanctuary in 1987. 1981 ने रामसर साइट, 1987 ने bird sanctuary देला. लेंथ होची 64 किलोमीटर एंड ब्रेथ होची 18 किलोमीटर. तीनटा डिस्ट्रिक्ट स्प्रेड होची पुरी, खोर्धा और गंजाम. ईस्ट कोस्ट ए माउथ ऑफ दया रिवर केमती तैयार होइतिला ना सिल्टिंग एक्शन ऑफ महानदी रिवर. शेप होची प्योर शेप. अंशुपाटा होची हॉर्सो शेप, चिलिका होची प्योर शेप एंड फॉर्मेशन होची अंशुपा फॉर्म होइतिला मिंडर शिफ्टिंग ऑफ महानदी एंड चिलिका फॉर्म होची सिल्टिंग एक्शन ऑफ महानदी रिवर. Chilika Lake has a number of islands, that is Krishna Prasad, Nalabala, Kalijai, Somolo, Honeymoon Breakfast, Barakuda and Bars Island. पढ़ी पारे आ भितर कोटा चिलिका लेक रोटे आइलैंड रे जाउनी. तो मेनली मन रखिया कृष्ण प्रसाद, नलबण, कालीजाई, ये तीनटा इंपोर्टेंट. The deepest part of this lake is Kalijai. Kalijai में जानछनी deepest part of this lake. Then आगोटे होची कांजिया लेक जोटा कि नंदनकानन रे प्रेजेंट अछि. नंदनकानन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट ऑफ भुवनेश्वर. एटा भी गोटे रामसर साइड. The botanical garden lies on the northern hillocks of this lake and Nandankanan zoological park south. Kanjia lake रे south रे Nandankanan और कांजिया लेक रे नॉर्थ रे बॉटनिकल गार्डन. देन पाटा लेक गंजाम रे प्रेजेंट अछि. सारा लेक पुरी रे. तांपरा लेक भी गंजाम रे. देन हम देखिबा आर्टिफिशियल लेक्स एंड रिजर्वोयर्स मैन मेड. हीराकुद रिजर्वोयर प्रेजेंट इन संबलपुर 16 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ संबलपुर प्रेजेंट. इट कवर्स एन एरिया ऑफ 743 स्क्वायर किलोमीटर, 743 square kilometer. That is Hirakud reservoir. It is a part of Hirakud Dam, longest dam in the world. The lake experiences visit of many migratory birds. Then Kolab reservoir, हम देखते Kolab Dam, located in Koraput district. Then Soroda Ghai, that is Ganjam. आउ किछि आर्टिफिशियल लेक्स रिजर्वोयर होछि जेमति दंडाधार जलप्रपात जोटा कि ढेंकानाल रोछि. आउ रोछि रेंगाली अनुगुळे, डेरास खोर्धा, इंद्रावती कलाहांडी, बालीमेला मालकानगिरी, झुमका खोर्धा, सोरडा घाई हम देखिले गंजाम, हदगड़ होछि केउंझर रे, रसेल कोंडा गंजाम. कोंडा मीन्स साउथ पार्ट रे आसियो गंजाम. देन पोटेरो रिजर्वोयर दैट इज कोरापुट. Springs in Odisha. The springs in Odisha are mostly developed on the eastern and western slopes of Eastern Ghats due to heavy rainfall and hard Gondwana genesis rock. Deolijhar, Anugul district, its water originates below a Shivalinga. That's an important question. देवलझरी अनुगुल डिस्ट्रिक्ट. अट्टी उष्ण प्रश्नवण. देन अट्री इन खोर्धा. इट इज ए हॉट सल्फर स्प्रिंग. लॉर्ड हटकेश्वर महादेव श्राइन रोज ये. टेम्परेचर इज कांस्टेंट अबाउट 55 डिग्री. देवलझरी हूँ अनुगुल. शिवलिंग प्रेजेंट अच्छी
अट्री होची खोर्धा, हटकेश्वर महादेव, तप्तपाणी होची गजपति डिस्ट्रिक्ट, इसरे मध्य सल्फर रोची, सल्फर प्रॉपर्टीज इन वाटर। आ गोटे तारावालो, तारावालो होची नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट, 8 एकर जगह व्यापिक रही। तारावालो हॉट स्प्रिंग इज द लार्जेस्ट थर्मल फील्ड इन ओडिशा। स्किन डिजीज ट्रीटमेंट हो पारे सल्फर वाटर प्रेजेंट जो। देन आम देखा वाटरफॉल्स, किसी इंपोर्टेंट वाटरफॉल्स इन ओडिशा देखा। दैट इज बड़घागरा केउझर डिस्ट्रिक्ट पेरेनियल सोर्स, सानघागरा मध्य पेरेनियल वाटरफॉल दैट इज प्रेजेंट इन केउझर। बड़घागरा हाइट 60 मीटर, सानघागरा हाइट इज 30 मीटर। देन बरही पानी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, दिस इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ ओडिशा, 400 मीटर, and the second highest waterfall of India. The main source of this waterfall is Budhavalanga river. Joronda waterfall, that's a meter, is near to Similipal National Park. Then Duduma, Duduma मत्स्य तीर्थ नाम को जाना जाए, मत्स्य तीर्थ। माचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट माचकुंड रिवर ऊपर है, ओडिशा आंध्रा बॉर्डर डुडुमा। देन गंडहाती, गंडहाती मन रखिपर गजपति, जोटा कि ग्लिटरिंग वाटरफॉल। गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे व्हिच वन इज द ग्लिटरिंग वाटरफॉल, दैट इज गंडहाती इन गजपति डिस्ट्रिक्ट, बड़घागरा इन केउझर डिस्ट्रिक्ट, बरईपानी इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, जोरंदा इन नेशनल पार्क ऑफ सिमिलीपाल, डुडुमा ओडिशा आंध्रा बॉर्डर। देन इंपोर्टेंट आमर होची खंडाधार, खंडाधार होची 12th लार्जेस्ट वाटरफॉल इन ओडिशा, 244 मीटर। I think it is the second largest waterfall, this is not the 12th, जोटे प्रिंटिंग मिस्टेक में भी हो जाइए। तो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रोची खंडाधार जलप्रपात 244 मीटर। देन कोयली घोगर गोटे रोची झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट। देन मिरिग्लोत, मिरिग्लोत गोटे रोची वाटरफॉल इन राउरकेला, काल्टा आयरन माइन्स प्रेजेंट होची, काल्टा आयरन माइन्स इन मिरिग्लोत राउरकेला। This is the 12th largest waterfall in, sorry, second largest waterfall in Odisha is Khandadhar. And fully Jharan, multicolored rainbow, important question होजी fully Jharan, that is multicolored rainbow which is created by sun rays falling scatter elaborate, fully Jharan present in Kalahandi district, that is important question. Then Pradhan Path, this is present in Devgarh district. This is the fast hydroelectric power in the state of Odisha. And Sangagra, which is a perennial waterfall, हम देखिले केउझर district present अछि। Then we will talk about bays and islands in Odisha. गोटिए बे अछि, that is Ukitola Bay. It is located on Jambu Island in Kendrapada district. It was formed from silt deposits. The bay has building constructed by Britishers. The islands in Odisha are Abdul Kalam Island, Subalya Island and Swords Island. Dr. Abdul Kalam Island
भुवनेश्वर इट वाज नोन एज व्हीलर आइलैंड 2015 को कर दिया डॉक्टर एपीजे कलाम आइलैंड इसरो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर इज लोकेटेड इन दिस आइलैंड व्हीलर आइलैंड क्या भीतर या देखते फास्ट व्हीलर आइलैंड या ब्राह्मणी और महानदी को लेकिन व्हीलर आइलैंड या देन सुबल्य आइलैंड महानदी रिवर एंड सुरुबाली जोरा देन शॉर्ट्स आइलैंड हेडक्वार्टर ऑफ भद्रक रे मेनली प्रेजेंट अच्छी सुबल्य आइलैंड महानदी रिवर आउ सुरुबाली जोरा डॉक्टर एपीजे कलाम आइलैंड इज व्हीलर्स आइलैंड इट इज 150 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैपिटल भुवनेश्वर ये रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ओडिशा एवं आपर चैप्टर रे हमें देखिबा एटा टिके लेंथी चैप्टर थिला 30 मिनिट वीडियो ऑलरेडी हो सारानी अधिक पेजेस मध्य थिला आपर चैप्टर हम देखिबा जोटा कि रही नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ओडिशा नेचुरल वेजिटेशन ने एत अधिक ना अल्प अच्छी मेनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स गुड़ा अच्छी तापर एगुड़ा आम कवर करनवा दैट इज चैप्टर 10 थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू